Hi and welcome to this video wherein we discuss your journey from a 60th percentile to a 99th percentile in the QA section. Now you would have started preparing for the CAT and बहुत सारे लोग हैं जो mocks भी दे रहे हैं. We get a lot of queries on a daily basis wherein people are not able to go beyond single digit scores when it comes to the quant section specifically. And बहुत सारे लोग होते हैं जिनको -3, -5, 0 ये marks भी मिलते हैं. Now this leads to a loss of confidence. एंड आप अगर बिना कॉन्फिडेंस के साथ टेस्ट देने जाओगे तो चांसेस आर वेरी हाई दैट यू विल डेफिनेटली नॉट स्कोर एट मोस्ट एज योर पोटेंशियल एज वेल. तो ज्यादा या कम स्कोर की बात ही नहीं कर रहा, आपका जितना पोटेंशियल है वहां तक भी आप नहीं पहुंच पाओगे. सो इन दिस वीडियो विल ट्राई टू सी सम स्ट्रेटेजीज दैट यू कैन यूज टू गेट रिड ऑफ दीज शैकल्स एंड मेक श्योर दैट यू एंड अप गेटिंग नियरर टू द 99th percentile in QA. Now 99th percentile in QA requires a lot of content as well in addition to strategy, but strategy can easily take you to a certain level जहां से आप 99 तक easily जा पाओगे. So first of all you have to understand what is it that we are looking for. तो एक स्कोर वर्सेस परसेंटाइल ग्रिड है which talks about the scaled scores versus the percentile slabs over the last 4 years. तो इसे देख लीजिए, इसकी अगर प्रिंट आउट चाहिए तो टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट, राइट इट इन योर नोट और समथिंग एंड जस्ट कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू नो व्हाट इज इट दैट यू आर एमिंग फॉर. अगर एक बेसिक बेंचमार्क आपको चाहिए यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट इन दीज टर्म्स. अगर एक टेस्ट इजी आ जाता है लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हिच इज अ 66 मार्क्स का सेक्शन लेट्स से, उसके अंदर आपको अगर 99 परसेंटाइल चाहिए वी आर लुकिंग एट अ स्कोर ऑफ अराउंड 30 to 35 मार्क्स. वो स्कोर पे आप 99 परसेंटाइल लेके आ पाओगे. But if you are looking at a difficult quant section, which will be true for most of the mocks this season, तो आपको एक 99 percentile के लिए roughly 25 to 30 marks का score देखना चाहिए. I would be more concerned about the 85 percentile वाला mark because that is the sectional cutoff for many of the colleges out there. तो 85 and 90 percentile वाले जो marks हैं उनको क्रॉस करने की कोशिश कीजिए. If you do that, then mostly you will be fine. And उसके आगे की जर्नी you will be able to manage very easily. So make sure कि हर एक मॉक के अंदर आप 10 से 15 मार्क्स के बीच में लेके आ रहे हो in this particular context. अगर वो आप consistently कर रहे हो, I am pretty sure you are going to do very well at the CAT. Now in terms of question selection, that is a very important point. आप जब भी कोई क्वेश्चन देखते हो उसे 4 पैरामीटर्स पे जज कीजिए, which is complexity, strength and weakness in your context, options क्या है और क्या numbers यूज किए गए हैं. So ये 4 पैरामीटर्स पे जज कीजिए क्वेश्चंस को. I have created a detailed video on how to select questions in a proper manner for all 3 sections. तो क्वांट की जो क्वेश्चन सिलेक्शन वाले वीडियो की लिंक है I'll put it in the description box below. Do check it out for a detailed video on how to select questions. Now in terms of how to improve percentile, there are 6 things that I have mentioned on this slide which you have to do diligently. अगर ये सारी चीजें आप करोगे there is a very good chance that you will do very well in the quant section. The first thing is you have to love the subject. You have to solve easy questions. हम बहुत बार ये देखते हैं कि हम सीधा सीधा मॉक्स ट्राई करना स्टार्ट करते हैं, हम सीधे सीधे डिफिकल्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, LOD2 LOD3 पे चले जाते हैं, बट वी डू नॉट रियली सॉल्व द इजी क्वेश्चंस जिससे हमारा बेस बिल्ड हो. तो हमें कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करना बहुत जरूरी है. अगर मेरे कॉन्सेप्ट्स ही ठीक नहीं है आई विल नेवर बी एबल टू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस, राइट. सो आई हैव टू सॉल्व इजी क्वेश्चंस फर्स्ट इन ऑर्डर टू बी एबल टू सॉल्व डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड वो कर करके आई विल फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट. You have to love numbers, you have to like maths. अगर आपको maths से नफरत है, if you don't like maths at all, you have never been taught well, there is a good chance that you will be scared of the subject, you will be afraid of the subject, you will be resentful towards the subject, and that does not really help in this particular context. So make sure that you like the subject, learn from people who make it easier for you, learn from people who will explain to you the theorems, learn from people who have patience when it comes to teaching you math, and वहां से अगर आप सीखोगे I am sure that you will enjoy learning math, which is the first step towards getting a good percentile. The second thing is जैसे जैसे आप पढ़ना शुरू करोगे, जैसे जैसे आप improve करना शुरू करोगे, you have to challenge yourself. Now challenge yourself को बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं that I will put a timer in front of me, I will try to solve this question in 1 minute and then I will have improved. ऐसा कुछ नहीं है. टाइमर का और challenging yourself का कोई लेना देना नहीं है. When I say challenge yourself, I basically am asking you to solve questions by skipping a few steps. So let's skip this step altogether. Let's do some calculation in my head. Let's try to arrive at the answer in a quicker manner, right? I'm not talking in terms of time. I'm talking in terms of what have you written. So try to visualize a lot of things. Try to do multiple steps in your head, because the best candidates who are going to get 99th percentile are the ones who will be able to visualize steps as they write them down. And a lot of times they will not even write down all these steps, and that is very important when it comes to you getting a 99th percentile. So you have to keep on challenging yourself. ये बहुत ज़्यादा important है.
Another thing in terms of challenging yourself is again establish familiarity with numbers. So let's say for example I take two random numbers, I take 29 and 52 and I multiply these two numbers. तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 29 into 52 क्या है, a lot of people will start getting into the nitty-gritties of calculation कि exact number क्या आएगा, I'll multiply 50 plus 2 into 30 minus 1 and then I'll find it, or I will use some ancient techniques to figure out the answer. ये बिल्कुल नहीं करना है. Try to reach a ballpark. मुझे ये बताओ कि 29 into 52 करना आपके लिए ज्यादा इजी है या 30 into 50 करना आपके लिए ज्यादा इजी है. Then try to challenge yourself by asking yourself, ये आंसर जो मेरा होगा 29 into 52 का, will that be greater than 30 into 50 or will it be less than 30 into 50, and have some logic behind it. तो अगर 50 से दो स्टेप्स आगे जाके मैं 52 पे पहुंच रहा हूं एंड 30 से एक स्टेप पीछे जाके अगर मैं 29 पे पहुंच रहा हूं, व्हाट आर द चांसेस दैट योर आंसर इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1500. सो कीप योरसेल्फ चैलेंजिंग on these fronts. Whenever you get spare time, try to think about numbers in this manner, and I'm sure you will improve over the next 3 or 4 months when it comes to establishing friendliness with numbers. The third thing, very important part, there are no shortcuts. जो भी आपको shortcuts सिखाए जाते हैं या दिखाए जाते हैं, वीडियोस में भी जो लोग बताते हैं, those shortcuts are arrived at after a long time after the paper is done. So टेस्ट खत्म होने के बाद लोग बैठ के सारे शॉर्टकट्स ढूंढ के निकालते हैं. ड्यूरिंग द टेस्ट वेरी फ्यू पीपल विल बी एबल टू फिगर आउट दैट शॉर्टकट ऑन देयर ओन, and the amount of time that you are going to take to figure out the shortcut, you can spend it solving it in a normal manner and still arrive at the answer in the same amount of time. So finding shortcuts is a matter of vanity. It's not really a way of life. So don't really get into shortcuts or take them too seriously, because most of the shortcuts will be applicable to single questions, and also you will mostly not be able to arrive at a shortcut during the test. So make sure that you are establishing pure math in your head and you are not running behind any shortcuts that exist. You have to go through the section quickly. A lot of time, I'm sure you would have noticed this, कि आप initial काफी सारे questions में बहुत time लगाते हो. You spend 3 minutes, 4 minutes on each question at the beginning, and after 25-30 minutes are done, you will see that you are at the 10th question. तो आगे के जो 12 questions हैं उनको solve करने के लिए you will have barely 10 to 15 minutes, and then you compromise on your decision making skills. तो वहां पे ये होता है that you will let go of a question very quickly. 5 सेकंड में आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, 2 सेकंड में आप क्वेश्चन छोड़ दोगे. So that is not something that is healthy. So make sure that you go through the section quickly at the beginning. Just establish a map of what the section looks like. सब questions को बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है, but at least just run through the entire section once. Just see what all questions are there. अगर पूरे section में जाने से आपको डर लगता है, make sure that you are going through 3 questions at a time. So I will look at question 1, question 2, question 3, and जो तीनों में से easiest question होगा, that is something that I will solve. After that, even if I find another easy question among 1, 2, 3, मैं वो solve नहीं करूंगा. I will go to questions 4, 5, 6, and then I will solve the easiest of these 3. अगर कोई भी question easy नहीं है, I will move on to 7, 8, 9 and so on. वैसे करके I would have gone through the entire section maybe in 20-25 minutes, which gives me 15 minutes to solve questions which I know are easy and are spread out throughout the section. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे questions पे आपको 4-4 मिनट टाइम नहीं मिलेगा सॉल्व करने के लिए. So make sure that you are attempting questions quickly and you are moving forward, and second round में जब आप आओगे वहां पे you can spend time on questions which deserve a lot of time. Then think about 5 easiest questions. तो जो मैंने बोला कि आप 3-3 के सेट्स में आगे मूव करो, you will have 7 such sets. कुछ सेट्स होंगे जहां पे आपको इजी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे. सो लेट्स से वी लुक एट कैट 2023, यू माइट नॉट हैव फाउंड इजीएस्ट क्वेश्चन इन ईच 3 ब्लॉक्स, बट वी आर सेइंग दैट अगर आपको 5 इजीएस्ट क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने आ गए इन योर सेक्शन, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व देम एज वेल, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट दोस 15 मार्क्स दैट आई स्पोक अबाउट अर्लियर. तो अगर आपको 85 या 90 परसेंटाइल एंश्योर करना है इन दैट सेक्शन, दीज 15 मार्क्स आर गोइंग टू बी लाइक गोल्ड डस्ट फॉर यू. और ये 5 easiest questions you will be able to solve in a couple of minutes or 150 seconds at max per question. तो हमेशा इस पे ध्यान दीजिए. And the last bit that I want to talk about here is mocks are generally reactive. Now when I say mocks are reactive, it basically means that your mock test will be designed keeping last year's CAT का level of difficulty in mind. तो अगर last year CAT 2023 was incredibly difficult, there is a high chance that the mocks that you are facing this year are incredibly more difficult compared to the mocks that people last year would have faced. तो ये reactive होते हैं. अगर इस साल CAT easy आ जाता है in terms of the quant section, which I think it is going to happen, then people will definitely will suffer because they might not really have solved easier questions along the way. So make sure that you don't let your confidence dent
बिकॉज ऑफ योर मॉक स्कोर्स. मॉक्स इस साल डिफिकल्ट ही होने वाले हैं ओवरऑल अगर आप देखोगे, बिकॉज कैट 2023 वाज डिफिकल्ट स्पेसिफिकली फॉर द क्यूए सेक्शन. तो आप वो परफॉर्मेंस को अपने कॉन्फिडेंस को हर्ट मत करने दीजिए. मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग दीज 3, 4, 5 क्वेश्चंस कंसिस्टेंटली, एंड आई एम श्योर व्हेन ऑन द डे इट मैटर्स, उस दिन पे आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करोगे. सो मेक श्योर दैट यू हैव दीज 6 थिंग्स इन माइंड. गो थ्रू द सेक्शन वेल, सॉल्व द क्वेश्चंस दैट आर द easiest, enjoy the subject, and I'm sure you are going to do a very good job when it comes to cracking CAT 2024, especially the QA section.